Welcome students to my YouTube channel, and today I will teach you the first lesson of English literature, 3 questions by Leo Tolstoy. So get ready. It's a completely educational channel. If you have not subscribed, then please subscribe and like for the new update. Start the chapter 1, 3 questions by Leo Tolstoy. About the author. Leo Nikolaevich Tolstoy was born in Russia in 1828. He served in army from 1851 to 1856, and he was a nobleman and who owned a great deal of land, but felt it was his duty to give it away and lead a simple life, and he came to be a firm believer in non-violence. Gandhi was greatly impressed by his tales, give a true picture of the life of the Russian peasants. It doesn't tell a story merely to amuse us, and he is teaching us a lesson. And War and Peace and Anna Karenina are two immortal classics written by Leo Tolstoy. So that he was a Russian writer, and not only he always tell us a story, but there is a moral value in it, and he was a strong believer, firm believer in non-violence like Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was greatly inspired by this person. His famous books are War and Peace and Anna Karenina. Okay, next come to the story. Let's start the beautiful story by Leo Tolstoy. It once occurred to a certain king that if he always knew the time to begin everything, and if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. So once there was a king, and he has 3 questions in his mind, 3 ideas that came to his mind. That was, what is the idea? To be a successful person in life, and without any failure, and what that should be. So if anyone knew the right time to begin any work, that be the important thing, and also the right people, who are the right people if you know, and also what is the right thing to do. All this, to know all this, what he did. So let's start. Come to the next page. And this thought having occurred to him, he had to proclaim throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would tell him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do. So these are the 3 questions, and to get this answer, he proclaimed throughout his kingdom, that he declared in his country, in his kingdom, that if anyone would give the answer, he would reward him. So what are the questions? The first question is the right time, about the right time. What is the right time for every action? And second question, that is, who is the necessary people or the important person? Okay. And third one is most important thing to do. What is the most important thing to do? So that राइट टाइम क्या है, राइट पर्सन कौन है जिसके साथ हम लोग काम करेंगे और किसको अवॉइड करेंगे, एंड ऑल्सो राइट थिंग क्या है, क्या काम सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग करना चाहिए, और कौन सा काम है हम लोग उसको छोड़ देना चाहिए. सो दैट एंड लर्न मैन टू हियरिंग दिस प्रोक्लेमेशन और द डिक्लेरेशन, एंड लर्न मैन केम टू द किंग. राजा के पास बहुत सारे लोग आए, दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस, बट डिफरेंटली, सबका आंसर अलग अलग था. सो जो कुछ भी आंसर दिए थे उसका क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्या आंसर था? रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? राइट टाइम क्या है? टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस टेबल ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर्स, एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट. हम लोग क्या करना चाहिए? लाइक द टुडे वी हैव द कैलेंडर देख के हम लोग जैसे काम करते हैं सब देख लेते हैं. सो दैट ऐसे कुछ एक टाइम टेबल, टाइम्स ऑफ डेज, टेबल ऑफ डेज,
मंथ्स ये सब बनाना चाहिए एंड ईयर्स का, इससे कुछ पता चलेगा। ओनली थॉट सेड दैट दे कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम, सही टाइम पे कर सकते हैं, बट कुछ उसका विरोध किए एट द ऑपोजिट एंड सम अदर्स डिक्लेयर दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड, पहले से हम लोग इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। So without wasting time, we should concentrate on all the works that was going on and then do what was most needful. सब काम को देख के जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग करना चाहिए without wasting time. And others again said that however attentive, राजा कितना भी attentive हो जाए, the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly. एक आदमी ये decide नहीं कर सकता, it is impossible for a single man to do the right things. To find out the right time for every action, but it could be possible if there be a council of wise men. अगर एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन करेंगे, एक सभा करेंगे, परिषद बनाएंगे वाइज मैन के, विज्ञ व्यक्ति का, वो बता सकते हैं, दे वुड हेल्प टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरी टाइम। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। So but then again others said that कुछ और क्या बोली, there was some things what could wait to be led before a council. काउंसिल के लिए ऐसा या काउंसिल के सामने आने तक वो वेट नहीं करता, वो सब काम क्या अपने हिसाब से हो जाता, क्या करना चाहिए। And in order to decide that one must know beforehand what was going to happen. तो हमें अगर पहले से पता होना चाहिए, पता हो जाएगा कि क्या होगा, तब उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो ये काम कौन कर सकता है? इट इज़ ओनली द मैजिशियंस हु नो दैट, मैजिशियन को ही पता है और किसी को पता नहीं है। एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियन। तो राजा किसको कंसल्ट करना चाहिए? एक मैजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। ये था कुछ लोगों का विचार। इक्वली वेयर द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो भी पर्सन से, इम्पोर्टेंट पर्सन से, कौन है इम्पोर्टेंट पर्सन, इससे रिलेटेड भी बहुत सारा अलग अलग आंसर्स आया। वो क्या था, कुछ लोग क्या बोले, सम सेड दैट अ पीपल द किंग मोस्ट नीडेड टू एट द काउंसिलर्स, काउंसिलर्स को इम्पोर्टेंस को दिए। एंड अदर्स क्या बोले, प्रीस्ट इंपॉर्टेंट है। और कुछ अदर्स क्या बोले, अदर्स से दैट द डॉक्टर्स वर द इम्पोर्टेंट पर्सन। एंड व्हाइल सम अदर्स सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, दैट व्हाई दे सेव द कंट्री फ्रॉम द एनिमी ऑफ अदर कंट्री। So all these differ, the answers differ. And to the third question also there are so many answers come. And to the third question as to what was the most important occupation, what is the most important thing to do for the king or anyone. Some replied, some answers came in this way, that the most important thing in the world was science. Science important thing है. Said that it was skill in warfare. कुछ बोले कि warfare ही देश के लिए बहुत important होता है। And others again said that it was the religious worship, religious धार्मिक काम ही सबसे इम्पोर्टेंट। सो दैट ये आंसर जो है सबका अलग अलग आंसर आया। फर्स्ट क्वेश्चन से भी अलग अलग क्वेश्चन आया। आई गॉट द different answers from the wise men of his country. The king was not satisfied with the answers given by the wise men of his country. So he decided, what he decided, all the question 1, 2, 3, the first, second, third, all the question answers that are different by the wise man. So he decided to get the correct answer and where to go. Let's come to the next paragraph. All the answers being different, the king agreed with none of them and gave the reward to none. किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया क्योंकि किसी का आंसर उनको सेटिस्फाइड नहीं लगा। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर, करेक्ट आंसर पाने के लिए टू हिज क्वेश्चंस ही डिसाइडेड टू कंसल्ट ए हर्मिट and the hermit was widely renowned for his wisdom. So एक फेमस नॉलेजियस पर्सन थे, उनको हर्मिट के पास मिलने के लिए वो प्लान किए। ओके, नेक्स्ट, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड and he received none but common folk. So the king put on simple clothes and before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse and leaving his bodyguards behind went on alone. जो सन्यासी रहते थे हर्मिट पे वो थोड़ा डिफरेंट थे। ही वॉज अ मैन ऑफ डिफरेंट काइंड। वो किसी से मिलते नहीं थे, बस सिंपल लोग मिलते थे, जो गांव वाले थे, कम पक्ष से मिलते थे। सो दैट राजा को क्या करना पड़ा आगे देखते हैं। ओके, कॉमन पक्ष से
जो गांव वाले जो पर्सन सिंपल पर्सन रहते हैं उन लोगों से मिलते थे। तो उसके लिए राजा क्या किए, अपना ड्रेसेस को खोल दिए, अपना जो राजा का ड्रेस था उसको खोल दिए, एक सिंपल फक का ड्रेस पहने। एंड देन उनका जो बॉडीगार्ड उनको भी पीछे छोड़ दिए, हर्ष बॉडीगार्ड सबको जंगल में छोड़े और अकेले हरमिट से मिलने वहाँ पहुँचे। ओके, क्योंकि हरमिट बाकी बड़े लोग को अलाउ नहीं करते थे। ओके, एंड ही ओनली सिंपल लोगों से मिलते थे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी को डिस्कशन करेंगे। ओके, आई विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।